Well, I really condemn the very harsh and abusive language used against you by my good friend Vivek. But he's right in one thing जो कहते हैं कि लोग सुनते हैं हमें, लेकिन ये नहीं बता रहे विवेक कि सुनने के बाद वो जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप डालते हैं अपने कानों में कि ये क्या सुन लिया मैंने. लेकिन I want to come back to this topic. Now, my good friend Professor Monojit Mondal is there, and if by any chance or happenstance or accident our WhatsApp conversation is leaked, you will only hear Bengali poetry, nothing else. And that is the hallmark of my good friend Professor Monojit Mondal. So may I please wish him luck for being elevated, because a lot of positions are going to get vacant in the upper echelons of the TMC. Number two is, when I think Mr. Saugata Roy is saying what Kalyan has done is not fit for human beings to do. I want to remind all those people, now they are castigating Kalyan Banerjee. A few months ago, the same Kalyan Banerjee was being hailed when he was mocking in the most derisory way the Honorable Vice President of India. तब कल्याण बैनर्जी इनह्यूमन चीजें नहीं कर रहे थे, तब वो गलती नहीं कर रहे थे, जब वो फिजिकल डिसेबिलिटी को मॉक कर रहे थे तब इन सब लोगों को मजा आ रहा था. आज उन्होंने अंदर की डर्टी लिनन फैलानी शुरू कर दी, धोनी शुरू कर दी, तो सडनली ही बिकम्स इनह्यूमन. दिस इज द प्रॉब्लम विद दीज हिपोक्रेट्स. नंबर टू, normally you have a boxing match and you have already a journalist who's a boxer, and his near and dear one is now a member of the TMC. Normally in a boxing match you have in the blue corner and the red corner. लेकिन यहाँ पे the person most enjoying must be संजू वर्मा. एक मीम आती है ना कि खूब लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, तो ये खूब लड़के एक दूसरे को समाप्त कर रहे हैं. बट I do agree with my good friend the political analyst आसिफ जी, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इस पूरी कंट्रोवर्सी इज टू डिस्ट्रैक्ट समवन, बट डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? टीएमसी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज द रियल टॉकिंग पॉइंट शुड बी द कैलामिटस कैटास्ट्रोफिक सैकिंग ऑफ 25,000 टीचर्स इन द बिगेस्ट टीचर स्कैम टू हैपन इन इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट कैस्टिगेटिंग द टीएमसी. So my quote unquote conspiracy theory is that they are all in it to distract the attention from this big scam, which in any civilized country should have led to the resignation of the sitting state chief minister. They are distracting. So we are talking about something else altogether. Talk about the teacher scam.